Hello everyone. Welcome back to our course on quantitative methods, the semester 7 course for economic honors at Delhi University under the new education policy. So let us get back to the revision that we are doing. This is Straighten Your Stats series. And in fact, today we are going to move ahead and we have sort of completed our stats part. And now we are going to officially start with econometrics. And this is where we start with your semester 4. So let me just let's share the screen and show you what we're going to do today. So this is your semester 4. So after you have your intermediate statistics in semester 2, till which we have already done, जहाँ पे हमने सारा कुछ hypothesis testing तक finish कर लिया, inference hypothesis testing, p values and everything that is done. Then you do not have any course in semester 3, which is based on statistics. And then in semester 4, you get to this course, which is your introductory econometrics. ठीक है? So introductory econometrics का जो syllabus है, वो ये है. This is what we are going to do today. Most of it we will finish. Some part of it we are going to take it up in the next session, because that is where it will be the bridge between what we have done so far and what this new course is going to teach us. Okay? So in this fourth year course, in this fourth semester course, I'm sorry, what you have is the simple linear regression model, which has some basic, method of estimation and everything. And then you basically extrapolate the results when you do a multiple linear regression model. Then we do a little bit, this is something that we won't do in a lot of detail because these are, variations of the basic model. Because इस सीरीज में हमारा एम है कि हम रिविजन करें, हम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, इसके ऊपर हमारा कम अटेंशन रहेगा. एंड डमी वेरिएबल्स इज समथिंग दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट session. And then we will do the violations of assumptions. This is where we will end today, right? So once we have done violations of assumptions, then we will be ready to discuss, take it to the next step. Okay, so this is what we're going to do today. So let's get started. All right. So for this course, the econometrics wala course, the main reference that is used in Delhi University is Gujarati. Okay? And the second compulsory reference that has been given is your Woolridge. It's the baby Woolridge introductory econometrics wala Woolridge. Now, for this, I will not go. I'll not use the book the way I was using Devore, क्योंकि मतलब इसके इंट्यूशंस हम दोनों बुक्स को कंबाइन करके अच्छे से समझ सकते हैं. प्लस द ऑर्डर विच आई प्लान टू फॉलो इज नॉट फॉलोड इन ईदर बुक. सो आई वुड बी फॉलोइंग, like I'll be using a combination of both books and we will be using the board. Rest, of course, you have already both the books and you know के concept में क्या chapter है. So you can always go back to them and look at it. But for the intuitive understanding, we will keep on using both the books together and use the board wherever necessary. All right. So then the first question is, once, to motivate anything, the first thing that we should be able to answer is that what is econometrics, and why we have a different name for it when it's a shoot off of statistics. So the reason is that econometrics में economics है ना, econ को metrics में measure करने का formal तरीका है. The reason why it is a separate discipline from your statistics is because statistics mostly, just a Devore was also a book for engineers, right? So it is actually a book for engineers and for the physical sciences. Whereas econometrics or economics is the study of social sciences, it is human sciences, right? So then statistics और econometrics में फर्क ये है कि econometrics is especially then designed, or rather the study of econometrics focuses on the methods and the tools that are developed. They focus on studying or analyzing situations which are inherently non-experimental.
right? So you understand, when we do any kind of physical experiment, when we do any kind of engineering experiment, it is an experiment where we are able to control a lot of the variables, right? We are able to control the environment. हम कभी pressure regulate करते हैं, कभी हम friction minimize करते हैं या regulate करते हैं. Whatever variable we are introducing into the system, that is well measured, है ना? इतना MLA, इतना MGA. It is more or less, right? It's a much more controlled environment, much more controlled experiment, which can mimic a random experiment, or random sampling much more closely as compared to what we can actually do in the human society. ठीक है, तो हम इतना कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में स्टडीज नहीं कर सकते हैं, है ना? अगर जैसे कि कोई पॉलिसी इंट्रोड्यूस होता है, दिस इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल टू दिस कोर्स ऑन इन योर 7th सेमेस्टर एज वेल, राइट? सो कई बार हम इकोनोमेट्रिक्स पढ़ लेते हैं और हमें समझ ही नहीं आता है कि मतलब हमने क्यों इतने सारे अलग अलग टाइप के तरीके पढ़े, एंड व्हाई आर दे especially useful, because you're in a setting of humans, you're in a non-experimental setting. तो इस नॉन एक्सपेरिमेंटल सेटिंग में जो हमने रैंडम सैम्पलिंग के assumptions पे रिजल्ट्स डिराइव किए हैं अभी तक, है ना? रिमेंबर, एवरी टाइम द मोमेंट आई इंट्रोड्यूस सैम्पलिंग टू यू, आई टोल्ड यू कि रैंडम सैम्पल का क्या मतलब होता है, एंड ऑल द रिजल्ट्स दैट वी हैड, चाहे वो CLT हो, चाहे वो उसका द हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड द इन्फरेंस, ऑल ऑफ दीज अंडरलाइंग assumption है कि सैम्पलिंग रैंडम थी. ठीक, तो अब ये तब चंगा है अगर भाई तुम रैंडम सैम्पलिंग को मिमिक कर सकते हो, बट अक्सर हम मिमिक नहीं कर सकते हैं, है ना? तो उस केस में फिर हम कैसे, व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट्स कैन वी ड्रॉ, और आफ्टर वी हैव ड्रॉन द रिजल्ट्स, कैन वी एक्चुअली गेट क्लोजर टू मिमिकिंग अ randomness of a sample. ठीक, so this is something that econometrics specializes in. That is why it's a separate field. All right. So that is why econometrics and not continuing with statistics in social sciences in economics. All right. All right. The second topic that we will do briefly is the kind of data that we have in econometrics. Kind of data or data structures. And in this case, you will have basically we have 4 kinds of data. Now, this is also that becomes important with respect to this course, because usually हम जो भी अभी तक करते हैं, है ना, हम जो भी अभी तक तुमने इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स में किया हुआ है, that is all again based on the assumption of random sampling. ठीक है, और जो यूजुअली हम डेटा स्टडी करते हैं वो है क्रॉस सेक्शनल डेटा. I'll explain what it is just right now. So cross sectional data जो है वो random sampling वाले assumption को अक्सर satisfy करता है, right? So you can say that the assumption of random sampling is usually satisfied if you have a good cross-sectional data, and whatever you have learned so far is the analysis of cross-sectional data. Woolridge की book का नाम ही है Introductory Econometrics, analysis of cross-sectional data. तो वो एक किस्म का डेटा है, but उसके अपने limitations हैं, right? So then you also have other kinds of data. So now when we will be doing much more advanced stuff, we have to be aware कि और किस किस टाइप के डेटा होते हैं. इसमें से जो 2 kind of data है, इनफैक्ट तीनों जो और kinds of data है, they are part of your syllabus. You will be analyzing them in this syllabus. Okay, so let us first of all look at what different kinds of data there is. The first one, as I said, is the cross-sectional data. Right? So your cross-sectional data क्या है? It is basically the kind of data जैसे हम DU के बच्चों का डेटा इकट्ठा कर लें. ठीक? So what you do is you are interested के DU में a sample of say 1,000 students, and then you say that for every student I want information on some variables. Right? तो हमने कहा कि हर वेरिएबल एक रैंडम वेरिएबल है, तो उस केस में DU स्टूडेंट्स का डेटा कुछ ऐसा दिखता था, where this is suppose student number, and this was say age, this was height, this was weight, this was maybe CGPA, right? This was their satisfaction with the NEP, and different kinds of things, right? Then what basically we have is
that हमने कहा कि ये सारे हम each रो को एक रैंडम वेरिएबल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, एंड इफ दे आर ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन विथ independence, ठीक, so then we have an IID sample and that's the definition of a random sample, ठीक। so जब कोई क्रॉस सेक्शनल डेटा होता है तो वो बहुत ही क्लोज होता है रैंडम सैम्पलिंग के, और फिर रैंडम सैम्पलिंग के जो भी रिजल्ट्स हैं, whichever results have रैंडम सैम्पलिंग बैकग्राउंड में assumption में जिसके चल रहा होता है, वो सारा वो फॉलो करते हैं, ठीक। so then this is how a cross-sectional data looks like. You have various variables. So you have different variables that are measured at any given point in time, ठीक। सो ये गिवन पॉइंट इन टाइम जरूरी नहीं है कि तुमने मतलब एकदम ही सब लोगों को एक साथ खड़ा कर दिया और एक साथ बोला कि अपना एज बताओ, एक साथ अपना वेट बताओ, हाँ मैं बिल्कुल एक गन पॉइंट पे तुम ले रहे हो सैंपल, नहीं। इट जस्ट मीन्स के यू आर लुकिंग एट अ टाइम फ्रेम in which most of these variables will not show a big change, right? So suppose you have NSS का data, you have ISDS का data, तो NSS का data collect करने में, वो sampling में it takes months, right? Because you have so many households to cover and it is a cross country representative sample. तो तब तुमको महीने लग जाते हैं, तो तुम क्या करते हो कि तुम मतलब you treat this entirely as one shot of time, है ना। क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, यू हैव सपोज आई डोंट नो a fruit, right? Imagine a fruit, you take a cross section like this, right? You cut the fruit like this, whatever you observe on this side या whichever side you choose, तो वो जो साइड पे तुम ऑब्जर्व करोगे वो है एक क्रॉस सेक्शन, जो कि तुमने एक सपोज टाइम तुमने ऐसे फ्रीज कर दिया, और इस टाइम में तुम्हें जो भी बाकी सारे जो वहां पे वेरिएबल्स दिख रहे हैं उनका ऑब्जर्वेशन ले ली, ठीक है। सो यू हैव द एज, हाइट, वेट, CGPA एंड NEP satisfaction for a bunch of students in a slice of time, that is your cross-sectional data, right? So in this case what happens is कि क्योंकि ये तुम इन बच्चों के नाम तो नहीं पब्लिश करोगे, है ना, so basically ये डेटा का में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, there is no particular order, you can just put them in any order as long as you treat the like this is one observation, right? Every row is an observation, this is one observation, second, third, fourth, fifth, every row is an observation, you can just shuffle the rows, order does not matter, ठीक है। And it can also be the case that different variables correspond to different time periods. So it could be that suppose you ask कि तुम्हारे स्कूल में कितने नंबर थे, है ना, so you have another column that is asking about your score in school, right? Class 12th score. So अब ये तो कहीं पीछे की बात है, right? So it can correspond to a different time period, but the point is that this is not then sensitive to when you are collecting the data. So this is not something that is going to change with time. इसलिए तुम past का data ले सकते हो ताकि क्योंकि वो data change नहीं, right? So then this is your cross-sectional data. Random sampling इसमें often satisfied रहेगी, इसीलिए हम शुरुआत यहीं से करते हैं. All right. Then the second kind of data is what is called a time series data. All right. This is also part of your syllabus now. Time series analysis एक तुम्हारे syllabus का unit 3 है in quant. So there it is important to understand कि time series data क्या होता है. अब time series data क्या होता है कि इसमें तुम समझ जाओ कि यहाँ पे तुम्हारा जो एक individual था ना, whichever individual you take or whichever unit you take, you have a one shot information about this individual. टाइम में एक किसी शॉट में उसके पास तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन. Suppose you choose any one variable of this individual. Suppose you choose, I don't know, weight. And you look at what is the weight of this individual in different time periods. So for example, every year, right? So your time series data will look like this. So you have the observation fixed, right? So suppose this is, say, individual, I'm sorry. This is your individual 5, right? So we just say that this is some observational unit. इसका तुमने weight data ले लिया है, and this is starting from say 2020, 21, 22 all the way till I don't know 25 के बाद भी तुम्हारे लेने का plan है, हाँ?
this is a time series data where every row corresponds to a different value of the same variable of the same unit. Right? So you are following one unit across time. ऐसे डेटा तुम्हें कहाँ मिलता है? सपोज तुम देखते हो किसी देश का जीडीपी डेटा, देखते हैं ना, तो चाहे तुम क्वार्टरली देखो चाहे एनुअल जीडीपी डेटा देख लो. सो देन अगेन व्हाट वाज द जीडीपी इन 2020, 2021, 2022? अनदर काइंड ऑफ डेटा, प्राइस इंडेक्स, है ना. इकोनॉमिक्स में इस टाइप के डेटा बहुत सारे होंगे. प्राइस इंडेक्स हो गया, तुम्हारा स्टॉक मार्केट का वो हो गया, सेंसेक्स का वैल्यू हो गया, राइट. You can look at data like life expectancy, enrollment rate, yearly, 5 yearly, monthly. Some things are measured monthly, some things are measured daily. But what is happening is you're fixing something. Sorry, you're fixing two things. You're fixing the variable that you're looking at, and you're fixing the unit for which the individual or the country or the state for which you are looking at the variable. ठीक है. तो अगर इस केस में तुम इंडिया का देख रहे हो, इस केस में तुम सम इंडिविजुअल नंबर 5 का देख रहे हो, राइट. मे बी तुम किसी स्टेट का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ट्रैक कर रहे हो, दैट इज अ टाइम सीरीज. सो ईच ऑफ दिस इज वन डेटा सेट, ना सेपरेट डेटा सेट्स. when you change the variable, when you change the individual, you get different data sets, right. This is your time series. The third kind of data set is the pooled cross section. राइट. नाम से ही पता चल रहा है, पूल्ड क्रॉस सेक्शन में तुमने डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस को पूल कर दिया. ठीक. तो सपोज तुमको ये दिखा कि एनईपी अभी चालू हुआ, तो क्योंकि ये फर्स्ट रोल आउट है, then you went to fourth year students, right, and only fourth year students this year, and then you asked कि fourth year student में तुमने 1000 बच्चों का सैंपल उठाया और उन 1000 बच्चों से सेम सवाल पूछे तुमने, right. You asked them questions about age. For some reason, you also want to know their height and weight, and then you have their CGPA, and then you have their NEP, happiness, reported happiness. ठीक है. और ये तुमने किया 2024 से चालू किया, right. You have 1000 students over here. Then in the next year 2025 में तुम फिर से फोर्थ ईयर वालों के पास गए, ठीक है, और फिर से सेम वेरिएबल्स पे यू कलेक्टेड योर डेटा. 1000 students, 2025. When you use these two data sets together, you have pooled two different cross sections. You can pool many different cross sections. You've pooled multiple cross sections, and that becomes a pooled cross sectional data. So two things to notice over here. Variables usually remain the same. That is the thing. जैसे NSS के rounds होते हैं ना, तो NSS के rounds में, multiple rounds में usually variables same रहते हैं. अगर variables revise होते हैं, that is a rare event, and that is a very planned event जिसके फिर बाद में it is well accounted for in any analysis that you do. So ideally variable same रहता है, but तुम उस variable को different time में जाकर cross sectional में connect करते हो. So the second thing to notice is that apart from the variable, so variables remain the same, but remember जो लोग fourth year में 2024 में थे वो 2025 में pass out हो जाएंगे और फिर third year वाले fourth year में आ जाएंगे 2025 में. So these 1000 people are not the same. ये दोनों same नहीं. Same variables, different people, usually different people. अब कोई fail हो गया रुक गया तो उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एम ये नहीं है कि लोग सेम हो. एम ये है कि तुम सेम टाइप के लोगों के पास जाकर सेम वेरिएबल्स पे डेटा कलेक्ट करो, right. So if it's your NSS, you go to the same your GAN sample. If it is say a rural sample, again you go to the rural areas, you collect information on the same kinds of things, household expenditure, monthly expenditure, nutritional information, fertility information, ये सारी चीजों पे डेटा कलेक्ट करो. बट तुम अगले साल जाके फिर से करो या तुम 5 साल जाके करो, and most likely the people will have changed, and then you pool this different multiple cross sections.
तो इससे होगा ये कि तुम्हारे पास जो भी सैंपल साइज यहाँ पे था, अगर 1000 बच्चे हैं, तुमने 2 क्रॉस सेक्शन पूल किया, तुम्हारे पास 2000 बच्चों का सैंपल हो गया, राइट? सो इट गिव्स यू a bigger sample to work with. It gives you better estimates, right? Plus it also gives you a sense of how things are moving across time. So you can look for, say, effect of policy. ठीक, तो अगर कोई चीज मान लो कि you were looking, instead of happiness with NEP, you were looking at student satisfaction at the end of 4th year or at the end of the college, right? So then you can have a scene where you have a before NEP student passing out and then a student who passes out after NEP. तो तब तुम एक बिफोर आफ्टर सॉर्ट ऑफ एनालिसिस कर सकते हो, है ना? तब तुम ऐसे देख सकते हो कि एनएपी के आने से क्या फर्क पड़ रहा है, वट एवर इज द हैप्पीनेस और satisfaction index that you're looking at, right? So a pooled cross section has this advantage that it gives you increased sample size, and it can be used to do this before after sort of policy impact analysis, and gives you a better idea of how things move in time, right? So that is your pooled cross section. And the final one is the last one is what is called the panel data, right? Or it is also called longitudinal data. Now, this is the most rigorous kind of data that you can have. और क्योंकि ये बहुत rigorous है, ये सबसे ज़्यादा difficult to collect भी है in terms of time and in terms of resources. Panel data क्या होता है? तुम्हारे पास suppose information है DU के 1000 students की, right? But you went to them in first year, right? So then what you did was, again, student number, and you had 1000 students जिनको तुमने उनके फर्स्ट ईयर में पकड़ लिया. And in the first year you asked for their age, weight, height, CGPA, right? And their in happiness with respect to NEP. अभी वो फर्स्ट ईयर में थे, बट उन्होंने NEP प्रोग्राम में घुसे थे, तो उनके पास उनका कुछ ना कुछ ओपिनियन था NEP को लेकर. तो तुम्हारे पास ये 1000 बच्चों का डेटा आ गया. अब तुमने क्या किया? Suppose you started this in let's say 2024. अब तुमने क्या किया? 2025 में तुम फिर से गए, जस्ट लाइक पूल्ड क्रॉस सेक्शन, तुम फिर से गए इनके पास, बट तुम अब नए बच्चों के पास नहीं गए. यू डिड नॉट गो टू फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स एंड एनीवन हु इज इन फोर्थ ईयर बिकम्स योर पॉपुलेशन. नो, you have fixed those 1000 students. वो 1000 बच्चे तुम फिर से उन्हीं बच्चों के पास गए. Now these kids are in the second year, right? So now what you did was you again collected information on the same variables, right? So age, of course, um, mechanically he +1 हो गई, right? But their weights would have changed, their heights probably would not have. CGPA definitely, right? क्या CGPA कैसे involve हुआ? And now you also have information कि उनका NEP के बारे में opinion कैसे change, right? Same 1000 kids. Then again, so this is your 2025. And then again in 2026, again in 2027, till they are in third year and fourth year. And then you have information on these variables for the same set of students for 4 years. This is called a panel data or a longitudinal data. Same लोगों के बारे में, when you follow the same people, that is a panel data. Same लोगों के बारे में तुम कुछ set of variables पे information collect कर रहे हो over the years, over the years, over the years. That is a very comprehensive data set. क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास उस individual के, तुम ये ऐसे सोच के देखो, the other way to look at this data is that for every individual, suppose 1000 में से जो first बच्चा था, first kid, इस first kid के बारे में you have information about this first kid का CGPA, for example, 4 साल का information है. NEP 4 साल का information है.
हाइट का, वेट का, एज का, सबका 4 साल का इंफॉर्मेशन। इसका क्या मतलब है? तुम्हारे पास इस फर्स्ट स्टूडेंट का एक टाइम सीरीज है ऑन ऑल दीज वेरिएबल्स, और तुम्हारे पास ऐसे 1000 टाइम सीरीज हैं, राइट? That is your panel data. That is panel data, which is basically tracking the same people, right? So that you have a time series for every individual. You have a time series on multiple variables for every individual. So in case of a country, suppose India का तुमने मतलब suppose South Asia में you collected information on say GDP and enrollment rates, school enrollment rates and some other variables, suppose child mortality. इस तीन पे तुमने कलेक्ट किया, सपोज HDI के लिए तुमने इस पे डेटा कलेक्ट किया, एंड यू लुक्ड एट इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, दीज 4 कंट्रीज यू वेंट, ठीक है? सपोज इसका डेटा तुमने 10 साल तक कलेक्ट किया, 2010 to 2020. This is a panel data, right? So you have information about each country on all these 3 variables for all those 10 years. Panel data. Okay, so doubtless to say, this is a very comprehensive kind of data, very costly to collect. India में ऐसे panel data बहुत कम है. Most of the advanced countries, especially the Nordic countries, वहाँ पे पैनल डेटा, बहुत अमेजिंग पैनल डेटा होता है उनके पास. लोग बच्चों को जो है वो बचपन से उनको ट्रैक कर रहे होते हैं ऑल द वे इनटू देयर एडल्ट लाइव्स, एंड दे हैव सम मैसिव लाइक वंडरफुल स्टडीज, जो कि बहुत सारी चीजों का, तुम सोचो कि तुम अगर लोगों का किसी ग्रुप ऑफ पीपल को उनका पूरा लाइफ ट्रैक करो तो तुम्हारे पास कितना रिच इंफॉर्मेशन होगा, right? So you know that some things have happened to the same individual. So then if things differ between two individuals, you can always say कि क्योंकि ये दो लोग थे, इनके situations अलग थी, इनके हालात अलग थे, इनके पास different, इनके खुद के they are different people inherently, right? That is why you observe these differences. But when you follow the same unit, the same individual, then you can rule that out, right? So then what it is said in econometric jargon is that you can control for individual fixed effects, something which is a major component, unit 1 का component है, panel data analysis का एक major वो है in your quant, something that we will talk about later. But that is the idea कि तुम फिर ये rule out कर देते हो कि results का difference इन टाइप के फैक्टर्स पे है, कि बिकॉज लोग अलग थे तो इसीलिए अलग रिजल्ट आया, राइट? अगर तुम एक ही इंसान को ट्रैक करोगे तो तुम्हारे पास ज्यादा कंसिस्टेंट, ज्यादा रोबस्ट रिजल्ट्स आएंगे, ठीक? All right. So now that we have understood that what are the different types of data, now अभी हम लोग directly चलते हैं to discuss the simple linear regression model. एंड आई विल नाउ एक्सप्लेन के, तो अब हम क्या करते हैं कि ये सब जो बाकी टाइप के डेटा है उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अब इस कोर्स में बात करेंगे, बट इस सेशन में आज हम बात करेंगे क्रॉस सेक्शनल डेटा की, एंड व्हाट डू वी एग्जैक्टली डू इन रिग्रेशन, और जो भी इकोनोमेट्रिक्स में हम एनालिसिस करते हैं उसमें हम करते क्या हैं. सो वी विल ऑलवेज in today's session be working with cross sectional data, जो कि इस टाइप का होगा. 1000 बच्चे DU से, तुम्हारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है उनके बारे में, one shot of time, no repetition of any kind, right? No time is not involved, it is just one shot of time. All right. All right, so the third thing that we're going to do is what is called the simple linear regression model, right? So we say that SLRM, simple linear regression model, और इसको हम ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स ही बोलते हैं, जिसका रीजन है कि इसको हम लोग डिराइव कैसे करते हैं, ठीक? तो डिराइव करने से पहले ये समझते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, राइट? नाउ रिमेंबर स्टेटिस्टिक्स में हमने क्या कहा था? स्टेटिस्टिक्स में व्हाटएवर वी वर डूइंग, वी सेड दैट हम एक truth के तलाश में है, right? This is what we did last time. We said that there is some, mean height of students, right, in the population, in DU का population. और but हमारे पास एक तुच्छ सैंपल है, जिस सैंपल का इस्तेमाल करके हमको उस truth का पता लगाना है ना? So then we have, what we have with us is a bunch of statistical tools
and the tool of random sampling. तो अगर random sampling का satisfy होता है assumption, तो हम sample mean को use करके उस truth का बहुत we can get very close to the truth, right? Because of the result which is called the central limit theorem. ठीक? In essence, we are doing the same thing. So what we do in econometrics is, in econometrics, we look at relationships. Okay, we look at relationships. We look at how two variables, right, based on the same population, how two variables are related to one another. What is their true relationship? ठीक है ना? So हम जो ये CGPA वाला एग्जाम्पल कर रहे हैं, सॉरी जो NEP वाला DU students वाला एग्जाम्पल कर रहे हैं, suppose for some reason you are interested in looking at that what is the relationship, right, between the CGPA that students have, right, how the students perform, and their satisfaction with NEP. Suppose ये relationship तुम्हें interest करता है. This is what you want to look at. So you have information on 1,000 students of their CGPA, right, and their satisfaction with NEP. और उसके बाद तुम्हें देखना है कि suppose how is NEP related to, or how does satisfaction to NEP change with changes in CGPA. This is the relationship that you want to look at, that you want to uncover. Now, why I say uncover, right? So suppose how we write it is that your Y variable is NEP, जिसका मतलब है this is the satisfaction to NEP, satisfaction or happiness or जो भी you want to say, and your X variable is the CGPA, है ना? तो अब why I say that we want to uncover this relationship, suppose कि population में, पूरे population में एक true relationship exist करता है, right? There is a way in which NEP का, the satisfaction NEP is related to student CGPAs, right? Suppose it is a positive relationship. Suppose students who are who have better CGPA, they feel more satisfied with NEP because they're always like कि हाँ ठीक है, अच्छे नंबर आ रहे हैं तो fourth year में भी कुछ अच्छा करके we will get an honors degree, right? We will get honors with dissertation, right? Honors with a research sort of tag, and they are very hopeful about it. They're happy about it. बट कंपेयर टू अ स्टूडेंट जिसका CGPA बहुत ही वाहियात है, उसको फिर नहीं करना फोर्थ ईयर, उसको नहीं चाहिए एक्स्ट्रा मतलब चौथा एक्स्ट्रा साल, एंड दैट पर्सन इज ऑलरेडी वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद कॉलेज एंड जस्ट वांट्स टू गेट आउट, right? So then if earlier there would not have been a distinction between, say, when you get out of third year, everyone gets out at third year, but now there is a distinction between if you leave at 3 and if you continue to 4. So this kind of people who have lower CGPAs, you can expect, suppose this is the hypothesis that you have, you can have this hypothesis that this relationship will be negative. Lower CGPA people will have a lower satisfaction level with NEP, higher CGPA, higher NEP. Suppose this is your expectation, है ना? इस हम कुछ ना कुछ assumption पर ही modeling करते हैं. ये हमारा एक assumption है, हमको दिख रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है, this seems plausible. So then we say that, okay, there must be a true relationship. Suppose this is your entire DU student ka data, and in this entire data, whatever 1,000 students you have in DU, जितने भी बच्चे DU में हैं, उन सबका CGPA तुमने लिया, और उन सब बच्चों का कुछ ना कुछ एक satisfaction level होगा NEP से, right? And this data, suppose, looks like this. Right? So I hope what it means you understand कि data को plot करने का क्या मतलब होता है, right? Suppose कुछ ऐसा दिखता है ना? मतलब if you pick up any one data, right? This is a data point, which is what for this student you have this CGPA student का इतना है और NEP satisfaction level इतना है.
right? For this student, the CGPA is this much, the NEP satisfaction level is this much. So जो डेटा था हमारे पास क्रॉस सेक्शनल, उसको हमने ग्राफ में प्लॉट कर दिया सिर्फ उन दो वेरिएबल्स, ठीक है ना? Alright. Now this is the hypothetical I am working with. Suppose के true relationship जो है वो कुछ ऐसा है, right? Suppose ऐसा एक positive relationship है NEP का और CGPA. तुम्हें पता नहीं है, तुमने क्या करना है, तुमने डेटा उठाना है, तुम्हारे पास 1000 लोगों का डेटा है और इस डेटा के बेसिस पे अब तुम्हें गेस करना है, राइट, कि ट्रू रिलेशनशिप क्या है, विच इज in essence the same thing that you have a sample, you have data, right? Based on this data, you have to guess, you have to make the best possible guess of what the true sample mean, right? This is the same thing. This is in essence the same thing. You are using the sample and your statistical and econometric techniques to uncover or to get as close to statistically as possible to the mystical truth, which of course does not reveal itself fully. But तुम्हें sample के तरीके से और data के माध्यम से it sends you very strong signals that you need to catch. This is what we do in econometrics, right? So this is the case where you have a simple means that you have one x variable, one y variable. और जब हम multiple करेंगे तो हम multiple x variables को use करेंगे, जिसका meaning I will explain later. ठीक है ना? So this is what we do. This is suppose some underlying relationship, but तुमको ये पूरा data दिखता नहीं है, तुमको ये पूरा plot नहीं दिख रहा है, right? तुमको एक limited plot दिखता है. So suppose the plot that you observe is something like this, right? Out of this, suppose सिर्फ इतना ही तुम observe करते हो for some reason, right? Or you pick up some people from here, from here, from here, from here. This is the patchwork that you observe, right? Or you observe only this sort of patchwork. It can be anything depending on how you've sampled, right? So then उस data के basis पे तुम्हें guess करना है कि क्या actual में truth हो सकता है, क्या actual relationship है NEP और CGPA का. Alright? Okay. So now what we do is, अब तो हम population की बात में करेंगे, है ना? अब हम पहले ये बात करते हैं कि हम assumption क्या करते हैं. हम तो population की बात कर लेते हैं पहले. So what we assume is कि even though the data is scattered, right? We assume that there exists a true population linear relationship between the x and y, right? So the model that we draw, we assume linear relationship. Okay, so what this means is we are not saying linear relationship. पहली बात कैसा होगा? Linear कैसा equation होता है? Y is equal to mx plus c. ये एक straight line की equation है जहाँ पे c will be your intercept, right? And m will be your slope. इसका slope हो गया m. ठीक है ना? तो इस केस में y हम कह रहे हैं कि NEP जो है वो एक इस तरीके से रिलेटेड है. लेट्स से दिस वाज योर CGPA, right? CGPA plus some constant, let's say k, right? This is the true relationship. बट अब हमको तो पता है ना कि ये ट्रू रिलेशनशिप ऐसा थोड़ी है कि तुमने मेरे को CGPA का वैल्यू दिया और उस CGPA का जो भी वैल्यू है सबका NEP का यही satisfaction level है. We know that ये एक डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप नहीं होता है. इन द रियल वर्ल्ड ऐसा डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप नहीं एग्जिस्ट करता है. कुछ लोगों के सेम CGPA होंगे, फिर भी उनका NEP satisfaction level वेरी करेगा, right? When we say that we are assuming a positive relationship, we mean कि इनका correlation positive होगा. They will be positively correlated, all right? So positive implies positive correlation. इसका मतलब जब ये वेरिएबल ऊपर जाए तो ऑन एन एवरेज ये वेरिएबल भी ऊपर जाए, right? So the actual way in which this kind of data will look like is that for every CGPA value you will have a
range of values that your NEP satisfaction can take. But what will happen is that as you get to higher CGPA values, right, the range of satisfaction will move like this. तो ऑन एन एवरेज वो ऊपर मूव करता जाएगा. ये है मतलब पॉपुलेशन मॉडलिंग का, जहां पे हम कह रहे हैं कि हाँ एक ट्रू रिलेशनशिप है जो कि पॉजिटिव है, और उस ट्रू रिलेशनशिप में जैसे जैसे ये मूव करता है ऑन एन एवरेज ये भी मूव करने लग जाता है, राइट. दिस इज व्हाट इज आवर हाइपोथेसिस अबाउट द पॉपुलेशन. Okay, now before I get to the sample, let us understand कि error term क्या होता है. So what we have done is, right now we are talking about modeling, and the way we model is a relationship like this. Remember ये एक deterministic relationship है, लेकिन कोई भी relationship deterministic तो होगा नहीं real world में, हमेशा ही कुछ ऐसा होगा. इनफैक्ट ये तो हमने बहुत क्लीन बना दिया है ना. अक्सर तो डेटा तो ऐसा होगा ना, इन सब के बीच में भी कहीं ना कहीं होगा, right? So rather than assuming a very clean sort of division in your x values, CGPA ऐसी वैल्यू है जो कि कोई भी नंबर, मतलब it can take a large number of values, we can treat it as a continuous variable. तो हर वैल्यू के लिए एक NEP satisfaction level हो सकता है. बस जब ये एवरेज से ऊपर जा रही हो CGPA, तो NEP भी एवरेज से ऊपर जाए. ये पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है ना. तो अब एरर का क्या मतलब है समझते हैं. सो this is a deterministic relationship. इस टाइप का relationship, if your NEP is say this is how we write it, beta naught. अब हम बेटास पे स्विच कर जाते हैं क्योंकि बेटा यूजुअली यही टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, राइट. सो MX हर स्टडी का अपना कुछ फेवरेट सिंबल्स होता है, कुछ फेवरेट ग्रीक लेटर्स होते हैं. इनका फेवरेट ग्रीक लेटर्स बेटा है, ठीक. सो बेटा नॉट कहते हैं यूजुअली कांस्टेंट को. गुजराती में बेटा 1 से शुरू करते हैं, वुलरिज में बेटा 0 से शुरू करते हैं. जो तुम्हारी मर्जी उससे शुरू कर, कोई फर्क नहीं है, बट याद रखो क्या शुरू किया. सो सपोज ये हो गया इंटरसेप्ट, राइट. प्लस beta 1 is your x1. In this case your x1 is CGPA. ठीक है. अगर तो हम यहीं तक छोड़ दें तो ये बन जाता है एक डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप, राइट. बट इफ वी एक्नॉलेज कि तुम्हारे सिर्फ CGPA वैल्यू मेरे को दे देने से मेरे को एग्जैक्टली NEP का वैल्यू नहीं पता चलेगा. अगर तो ये रिलेशनशिप होता, राइट. सो यू गिव मी द वैल्यू ऑफ CGPA एंड गिवन द वैल्यूज ऑफ दीज बेटा, मेरे को तो एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि NEP का क्या वैल्यू है, क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन है मेरे को दी हुई है. बट ऐसा होता तो नहीं है ना. ऐसा कोई रोबोट बन के तो नहीं बता रहा है क्या करना है. तो क्या होता है, हर बार तुम्हें एक फिक्स्ड कंपोनेंट मिलेगा उसका, विच विल बी गिवन बाय दिस, और उसके साथ मिलेगा एक एरर टर्म, राइट, जिसको हम यूजुअली डिनोट करते हैं U से, राइट, या फिर E से, या फिर एप्सिलॉन से, ब्ला ब्ला ब्ला. ये सब डिनोट करने का तरीका है. अल्टीमेटली ये सारी चीजें एक ही बात कह रही है. क्या बात कह रही है. NEP का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है ना. CGPA अगर हम ऐसा सोचें कि CGPA के बेसिस पे वो डिटरमिन होता है, CGPA एक वेरिएबल है. NEP का सेटिस्फैक्शन लेवल अगर तुम सोच के देखो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड कर सकते, राइट. यू कैन हैव स्टूडेंट्स हु आर वेरी गुड एट स्टडीइंग, राइट, बट दे डोंट वांट टू स्टडी सो मच, करेक्ट. You have to, they will not be happy with CGPA, with NEP, right. You have student जो कि बहुत ही जबरदस्त चीटिंग करके पास हुए हैं. CGPA बहुत हाई है बट उनको पढ़ाई में कोई मन नहीं लगता, उनको 4 साल की पढ़ाई नहीं करनी. अगेन यू मे सी के NEP का डिटर्मिनेशन उन किन चीजों पर डिटर्मिन बेस करता है, राइट. हो सकता है कि ये सब अननोन फैक्टर्स हैं, राइट. दीज फैक्टर्स आर अननोन, जो तुमने अपने इक्वेशन में इंक्लूड नहीं किए हैं, ठीक. हो सकता है कि उस बच्चे का CGPA बहुत अच्छा हो, लेकिन दिल्ली में रह के, हॉस्टल में रह के, राइट, प्राइवेट हॉस्टल में रह के, कौन हॉस्टल देता है DU में, प्राइवेट हॉस्टल में रह के पढ़ाई करना एक और एक्स्ट्रा साल, इट्स अ कॉस्टली अफेयर. योर फैमिली
फाइनेंशियल स्टेटस ऑल्सो डिटर्मिन्स के तुम्हारा एनईपी में कैसा, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट एनईपी, राइट। सो व्हाट वी सी इज कि कोई भी वेरिएबल है, जैसे एनईपी एक जैसा वेरिएबल है, सीजीपीए उसका सिर्फ एक डिटर्मिनिंग फैक्टर है, इट इज जस्ट वन डिटर्मिनिंग फैक्टर, राइट। एंड देयर आर अ बंच ऑफ अदर फैक्टर्स जिसको हम कभी अनऑब्जर्वेबल्स बोलते हैं, क्योंकि हम उन्हें ऑब्जर्व नहीं कर रहे, ठीक है। हम उन्हें कभी एरर बोलते हैं, राइट, या फिर हम उन्हें एप्सिलॉन बोलते हैं क्योंकि ये ई है ग्रीक में। ये है एरर टर्म, और जब हम इसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं तब हम फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ सीजीपीए बीटा नॉट एंड बीटा 1 और एरर का जब वैल्यू मिल जाए तो हम एग्जैक्टली एनईपी बता सकते हैं। ये एरर क्या कैप्चर कर रहा है? दिस एरर इज नॉट कैप्चरिंग द एरर इन द रिलेशनशिप, it is capturing the error in which you have modeled the relationship, है ना। तो यहाँ पे डिफरेंस देखो कि कोई भी जो सोशल साइंस में ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन सोसाइटी में रिलेशनशिप होगा वो हमेशा ही ऐसा होगा। ऐसा कोई दो वेरिएबल एकदम ही परफेक्टली कनेक्टेड नहीं होंगे, हमेशा हर चीज में मल्टीपल चीजें उसको अफेक्ट कर रही होंगी। इफ यू हैव डिसाइडेड कि मेरे को एक सिंपल लिनियर रिग्रेशन करना है, तो तब तुम्हारा मॉडल डेफिशिएंट है, तुम्हारे मॉडल में एक एरर है इन द सेंस कि तुमने मेरे को वैल्यू दिया सीजीपीए का, राइट। सो सपोज यू गिव मी अ वैल्यू ऑफ सीजीपीए, दिस वाज माय लाइन, ठीक है, ये डिटर्मिनिस्टिक पार्ट, ये जो सीजीपीए का वैल्यू आया, तुमने मेरे को एक वैल्यू दिया, मैंने तुमको एक एनईपी का वैल्यू दे दिया, दिस इज व्हाट माय मॉडल कैन टेल यू। बट जहां से मेरा मॉडल फेल करेगा, सपोज इस बंदे का एनईपी का वैल्यू जो है वो इतना है, मच हाइयर, राइट, और इस बंदे का एनईपी का वैल्यू सपोज यहाँ पर है। सो ये जो डिफरेंस है, दिस इज द एरर इन योर मॉडल। और ये पॉपुलेशन की बात है, पूरे पॉपुलेशन में ही ऐसा एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक रिलेशनशिप होगा, या फिर उस रिलेशनशिप में एक डिटर्मिनिस्टिक पार्ट होगा, राइट, और एक सिस्टमैटिक और एक नॉन सिस्टमैटिक पार्ट होगा। ये है नॉन सिस्टमैटिक पार्ट, राइट। सो दैट इज योर एरर टर्म विच बेसिकली रिफ्लेक्ट्स दैट एनी variable has, like any variable is dependent on a multiple uh, uh, dependent on multiple other variables. What you have captured in your model is just one of them. Later जब हम multiple linear regression करेंगे तो हम multiple भी उठा पाएंगे, फिर भी हम देखेंगे कि error term मौजूद रहेगा, right? So we'll get to that in some time. So this is what we have. This is the way in which we model the relationship in the population, right? So हमने कहा कि population में इनके बीच एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है, मतलब कि ये जो बीटा 1 है वो पॉजिटिव है, राइट। एंड ऑफ कोर्स इट इज नॉट डिटर्मिनिस्टिक, तो कोई ना कोई पार्ट वहां पे हमारा छूटता है। ये है पॉपुलेशन, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, राइट। पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, जो कि हम बात कर रहे हैं ट्रू पॉपुलेशन की, ट्रू रिलेशनशिप की, जिसके कि डिटर्मिनिस्टिक पार्ट को फंक्शन बोलेंगे और जो पूरा मॉडल है वो पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल हो जाए। जब हमने फंक्शन बोला तो हम सिर्फ डिटर्मिनिस्टिक पार्ट की बात करें, right? So this is just terminology, but what it means is that we are talking about whatever truly exists, in the population, ठीक है। Now let's get to the sample, right? So अब sample में हम क्या करते हैं, अब हमारे पास सिर्फ एक sample है, right? And this was what NEP, and we have 1,000 observations that look like this, ठीक है, right? अब सपोज इस ये जो है, ये जो प्लॉट है, एक ट्रू रिलेशनशिप यहाँ पे लाई कर रहा है ना, जो कि छुपा है, इट्स हिडन, यू डोंट नो इट, राइट, जो कि हमने यहाँ पे अज्यूम किया कि ऐसा है, ठीक है ना, बट असल में तो किसी को पता नहीं है। अब हमको अपना स्टेटिस्टिक्स यूज करके उसके एज क्लोज एज पॉसिबल पहुंचना है, जस्ट लाइक हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ट्रू पॉपुलेशन मीन के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे थे
x बार यूज करके, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे डेटा यूज करके वहां तक पहुंचना है। तो यही करने का तरीके को जो मेथड हम यूज करेंगे वो कहलाता है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स, एंड दैट इज नथिंग बट अ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन. Let's see how. So what we have done is maximum likelihood estimation क्या था? MLE was doing what? MLE was saying कि ये तुम्हारा सैंपल है, राइट? What values of the parameters? अब इस केस में देखो पैरामीटर्स क्या है? पैरामीटर है तुम्हारा बीटा नॉट और बीटा वन, राइट? If this was your population regression function, PRF was NEP is equal to beta naught plus beta 1 times CGPA, right? इस फंक्शन के पैरामीटर्स क्या है? Beta naught and beta 1, right? If you change beta naught, your line will change. If you change beta 1, your line will change. Remember, पैरामीटर्स क्या करते हैं? जो फैमिली के मेंबर्स को एक दूसरे से अलग बताते हैं. This, your y is equal to mx plus c. This will always be the equation of a straight line, right? But एक straight line को दूसरी straight line से क्या अलग करेगा? Intercept and slope, right? So अगर intercept बदलोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, slope बदलोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा. ये सारे straight lines के ही equations हैं, है ना? ये सारे equations straight lines के ही हैं. सबका family same है. क्या फर्क है? First name and middle name का, ठीक? So similarly अब हमको क्या पता लगाना है? ये सारे स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस में से कौन सा वाला अपना है? कौन सा वाला वो है जो हमारे सैंपल को देने के लिए मैक्सिमम, जो हमारे सैंपल के आने की लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज कर देगा, राइट? एमएलई का फंडा. सो व्हाट वी आर सेइंग इज दैट द वैल्यू ऑफ these parameters that will maximize the likelihood of the sample we have received, which is another way of saying that those values that will best fit the data, right? I'll give you an extreme example. Look at these two lines. एक लाइन कुछ ऐसा है और मतलब ये लाइन ऐसा है तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा. बेटा नॉट, सपोज इसका जो है ये 5 है और इसका स्लोप है लेट्स से 0.5, राइट? ये एक है. सपोज दूसरा है, एक और लाइन है, तुम्हारे पास दो कंटेंडर्स हैं. दूसरा कंटेंडर है ये, जिसका इंटरसेप्ट है 50 और जिसका स्लोप है 3. अगर तुम्हें इन दोनों लाइंस में से चूज करना हो टू फिट द डेटा और द सेट ऑफ बेटा नॉट एंड बेटा वन दैट मेक दिस सैंपल द मोस्ट लाइकली, यू विल चूज दिस वन, राइट? ये वाला चूज करोगे ना, क्योंकि अगर ये होता एक्चुअल लाइन तो हमको ये खिचड़ी यहाँ पे क्यों मिल रही होती? हमें कुछ यहाँ पे मिल रहा होता ना, इसके अराउंड चीजें मूव कर रही होती ना. बट ऐसा तो नहीं है. यहाँ पे तो कोई भी सैंपल पॉइंट नहीं है, कोई भी डेटा पॉइंट नहीं है. तो ये वाले वैल्यूज आर ए बेटर फिट देन दीज वैल्यूज, राइट? नाउ मोर रियलिस्टिक, सपोज तुम्हारे पास एक ये रेड वाली लाइन है, सपोज एक ग्रीन लाइन ऐसी है, सपोज एक पर्पल लाइन ऐसी है, राइट? सपोज एक ब्लैक लाइन ऐसी है. अब असली टास्क क्या है? ऑफ कोर्स ये दो रेड लाइंस में तो चॉइस आसान थी, बट असली चॉइस क्या है? ये रेड, ब्लैक, ग्रीन और पर्पल लाइन में से चूज करना. इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा मतलब ऐसा सेट ऑफ और ऐसा पेयर ऑफ बेटा नॉट एंड बेटा वन है जिससे कि हमको ये वाला डेटा मिल जाए सबसे ज्यादा लाइकलीहुड से? दैट इज योर एमएलई, ठीक है. और उसको करने का तरीका है, द वे वी हैव डिफाइंड इट इज टू मिनिमाइज द basically you choose the one that best fits the data, which is saying that you want to minimize deviations from the line, ठीक है. So what you are doing is, so we want
बेस्ट फिट, राइट? व्हाट इज बेस्ट? बेस्ट क्या होगा? सपोज के एक लाइन ये है और एक लाइन सपोज ये है ना? तो इस लाइन में देखो, अगर तुम दूसरा, लेट मी से दूसरा लाइन ब्लैक वाला है, तो तुम जब देखोगे कि अगर तुम ब्लैक वाले लाइन को ये लेके प्रिडिक्शन करते हो, है ना, तो जब तुमने बोला कि मेरा सीजीपीए यहाँ है, तो तुम्हारा प्रिडिक्शन यहाँ था, जबकि एक्चुअल सीजीपीए यहाँ पे बहुत ऊपर ऊपर है ना, काफी एरर है तुम्हारे प्रिडिक्शन में। एज अपोज टू जब तुम ग्रीन वाले लाइन से प्रिडिक्शन करते हो, तो तुम्हारा सीजीपीए कहीं यहाँ पर आएगा और थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा नीचे है, ऑन एन एवरेज तुम ठीक रहोगे, राइट? इसको हम कहते हैं कि यहाँ पे एरर कम है इन प्रिडिक्शन, है ना? प्रिडिक्शन से जो एरर्स हैं, after the difference between the actual value and the value that you have predicted is lesser in case of the green line as compared to the black line, ठीक? उसको ही फॉर्मलाइज करके हम ये वाला मेथड यूज करते हैं। तो हम कर क्या रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि बेस्ट फिट वो है जो कि एरर्स इन प्रेडिक्शन को मिनिमाइज करते हैं, राइट? एंड देन वी से के हमको बेसिकली क्या मिनिमाइज करना है? जो अब हम क्या डिफाइन करते हैं, जो वाई आई है ना, आई से क्या हम डिनोट करते हैं? आई इज ऑब्जर्वेशन नंबर, ठीक है? आई तुम्हारा ऑब्जर्वेशन नंबर है और वाई तुम्हारा, जिसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, जो हमारे केस में है एनईपी, ठीक है? एनईपी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, एनईपी ऑफ द आईएथ ऑब्जर्वेशन। हाउ मेनी आईज डू यू हैव? यू हैव 1000 ऑब्जर्वेशंस। उन 1000 में से कोई भी आईएथ ऑब्जर्वेशन उठा लो, उस आईएथ ऑब्जर्वेशन में एक एक्चुअल उसका एनईपी का सेटिस्फैक्शन वैल्यू है, ठीक? लुक एट दिस डेटा, इन दिस डेटा सपोज दिस इज योर आईएथ ऑब्जर्वेशन। ये तुमने प्लॉट कैसे किया? तुमने देखा कि उसका सीजीपीए का वैल्यू कितना था, है ना, और तुमने देखा कि उसका एनईपी का वैल्यू कितना था, सीजीपीए का इतना था, एनईपी का इतना था, तो वो ये डेटा पॉइंट बन जाता है, ठीक? ये है एक्चुअल। अब मान लो कि तुमने जो लाइन प्रिडिक्ट किया, राइट, वो लाइन कुछ ऐसा है, तो ये है तुम्हारा प्रिडिक्शन, दिस इज एक्चुअल, दिस इज प्रिडिक्शन, और ये जो एक्चुअल माइनस प्रिडिक्शन है, ये जो तुम्हारी में चूक, जो जिससे तुम चूक गए, जो डिफरेंस है, दैट इज द रेसिडुअल, ठीक है? रिमेंबर इट इज क्लोजली रिलेटेड टू द एरर टर्म दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, लेकिन ये चीज याद रखना कि एरर इज ए पॉपुलेशन क्वांटिटी एंड रेसिडुअल which is basically the yi, which is actually ये वाला actual value minus what you have predicted yi hat, जो कि ये वाला है, ठीक है? prediction yi hat actual yi, इसका जो डिफरेंस है, इसको हम बोलते हैं रेसिडुअल, और इसको हम यूआई हैट बोल देते हैं या ईआई हैट बोल देते हैं। दिस इज ए सैंपल क्वांटिटी, ठीक है? इसके ऊपर आई विल कम लिटिल लेटर, थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूंगी, बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रेसिडुअल विच इज द सैंपल क्वांटिटी। और हमारा ये एम है कि हमारी लाइन जो है, जो हमारा फिट कर रहे हैं हम जिस लाइन को डेटा में, वो लाइन ऐसी हो जिसके कि रेसिडुअल्स मिनिमाइज्ड हो, है ना? क्या फायदा जब तुम्हारा प्रिडिक्शन एकदम ही दूर दूर तक कुछ डेटा के पास ही नहीं है, तुम्हारे रेसिडुअल्स बहुत हाई है नंबर, राइट? सो वी वांट टू मिनिमाइज these residuals, right? But मतलब we want to minimize the residuals and we actually want to minimize the sum of the residuals, right? And what you will realize is that the sum of the residuals will always be zero, because अगर तुम
मीन वैल्यू लेकर चलते हो तो उसके अराउंड जो भी डेविएशंस होते हैं उनका सम हमेशा 0 होता है, समथिंग दैट इज अ स्टेटिस्टिकल ट्रूथ, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। प्लस अगर तुम सिर्फ सम देखोगे, राइट, तो उसको तुम कैलकुलस नहीं यूज कर पाओगे, है ना। सो देन टू बी एबल टू यूज कैलकुलस एंड टू बी एबल टू लुक एट ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, वी इंस्टेड डू दी sum of squared residuals, right? So what you do is you have a bunch of, you have this whatever line you have, ठीक है, उस line के around values होंगे, हर value का एक actual value होगा, एक predicted value होगा, मतलब एक residual होगा, ये सारे residuals हैं, ठीक। तुम ये सारे residuals इकट्ठा करोगे, हर एक को स्क्वायर करोगे और फिर इनको सम कर दो, ठीक है। और फिर जिन भी वैल्यूज ऑफ बीटा नॉट एंड बीटा वन हैट, जो भी स्लोप और इंटरसेप्ट वैल्यूज होंगे जिनसे ये सम ऑफ स्क्वायर्ड रेसिडुअल्स मिनिमाइज हो रहे होंगे, वो तुम्हारा बेस्ट फिट होगा। दैट इज हाउ यू आर डिफाइनिंग द बेस्ट फिट, right? So this is what you do. I'm just writing it. We won't go into solving all this. So this is what you have. You minimize um, sigma ui hat square, right? This is what you do, and then you get your beta naught hat and beta one hat, ठीक। और ये जो हैं ऐसे होते हैं जो कि, सॉरी, जो let's just see over here, these are such values that will be able, that will enable you to pick out between the purple, the black, the red and the green, है ना। इस केस में रेड वाला और या फिर ब्लैक वाला ज्यादा बेहतर लग रहा है ना, हो सकता है उनके बीच में कोई तीसरा भी ऑप्शन हो जो कि इससे भी बेहतर। But using calculus, using this optimization exercise, what you essentially do is you pick out the best line, in the sense कि सब इन मतलब वो बेस्ट प्रेडिक्ट कर दे डेटा को। उसके जब वो लाइन यूज करके तुम प्रिडिक्शन करो तो तुम ऐसा फालतू के गेसेस नहीं मार रहे होगे और इतना गलत नहीं हो रहे हो, तुम एक्चुअल में ऐसे हो रहे होगे, तुम ऑन एन एवरेज करेक्ट हो रहे हो, right? When you pick out a value, then there will be some values that will be higher, some values that will be lower, but sum of squared residuals, some of the square of these, you know, mismatches between what you predict and what the actual point was, that will be minimized. Okay? ये है फंडा, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स। ऑर्डिनरी क्यों बोलते हैं ये हम बाद में करेंगे, जब हम पता चलेगा कि ऑर्डिनरी के अलावा क्या ऑप्शन है। बट इसको हम ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स बोलते हैं, लीस्ट स्क्वायर्ड, राइट। सो यू आर मिनिमाइजिंग, you are choosing the values of the intercept and the slope, right, that minimizes the squared residuals, ordinary least squares, राइट। और इसको यूज करके तुम्हें एक फॉर्मूला मिलेगा जो कि तुम्हें बीटा नॉट हैट और बीटा वन हैट का एक फॉर्मूला मिलता है, which when you put the values in those formula you will get a number, right? So for every data you will, every sample you will get the beta naught hat and beta one hat, the slope and the intercept, that will be the best fit of the data, right? So these are called OLS estimators. Remember, estimators are statistics with a purpose. तो ये लोग क्या है, ये है एस्टिमेटर। बेटा नॉट हैट ट्रू बेटा नॉट का एस्टिमेटर है, बेटा वन हैट ट्रू बेटा वन का एस्टिमेटर है ना। अब वो एस्टिमेटर की तरह कैसे परफॉर्म करते हैं, उनके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, अनबायसनेस वगैरह, वेरिएंस वगैरह, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट दिस इज व्हाट इट मींस, राइट। सो दे आर एस्टिमेटर्स ऑफ the mystical truth, which is the true relationship between CGPA and NA. Cool. So this is your, I'm sure इसका derivation तुमने multiple times किया होगा, something the math that I don't want to get into, I just wanted कि तुम्हारा intuition clear. Okay. All right. So this is what you call, ये जो तुम्हारे पास अब line आएगी, right? So this is what you have. You will have that your NEP
hat, which means the predicted NEP, right? This will be equal to beta naught hat plus beta 1 hat क्या था CGPA, right? Then this is your equation of the straight line in the sample, and it is called the sample regression function, SRF. और ये क्या था? ये था तुम्हारा, कहाँ गया, sorry, this was your, I mean, where did I write it, Baba? Yeah, this was your PRF, population regression function. So ultimately, what are we doing? We are using the SRF to make an estimated guess about the PRF, to make a very educated guess, sorry, about the PRF, using the SRF to estimate the PRF. Same as what we did in statistics, sample mean to estimate population mean. Population की एक सच्चाई है जिसको हम estimate करते हैं SRF से. Cool. So ultimately, in a sense, doing the same thing. All right. So if over here what we have is that, just one point, this is a deterministic function, है ना? ये वो equation of the straight line है जो यहाँ पर है. लेकिन अब हमको पता है कि obviously the data points, the actual data points do not lie on the straight line. ठीक है ना? So जो population regression model है, sorry, जो sample regression model है, वो क्या है? जो तुम्हारा actual NEP है, not the predicted. The actual NEP is equal to what? It is equal to एक predicted part plus एक error part. So this is called the systematic part, and this is called the unsystematic part, right? Where we are saying that जो actual NEP है लोगों का, है ना, वो कुछ हद तक हम उसको predict कर पाए हैं using CGPA, right? Some of it we are able to predict using CGPA, but we are still like a little off from the actual value. We are off by UI hat. ठीक है? So ये है तुम्हारा residual. Whenever you have a hat, that is a residual. Hat is always sample ka counterpart, and this is the systematic part, because this is the part of NEP that can be predicted once you give me a value of CGPA, right? So data में से मैं ये value use करके I can tell you कि NEP का क्या prediction है. But of course the actual NEP values lie around this. So once you take that into account, you can have the true NEP value, which is some of the systematic and the unsystematic portion, something that we are not able to model, or we have chosen not to model due to various reasons. ठीक है? अब एक फाइनल चीज इसमें वो ये है कि ये जो एरर और उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है. सो द रिलेशनशिप between your UI, which is the error, and UI hat, which is the residual, काफी सिमिलर है. लेकिन फर्क ये है कि ये जो एरर है ना, जस्ट लाइक ऑल पॉपुलेशन क्वांटिटीज, हर इंडिविजुअल या हर ऑब्जर्वेशन के लिए ये एरर का वैल्यू एक्चुअली फिक्स है. एरर भी रैंडम वेरिएबल है, ठीक है ना, ये सारा रैंडम वेरिएबल ही है. योर CGPA और योर NEP और एरर सारे रैंडम वेरिएबल्स हैं. लेकिन जैसे ही तुम एक इंडिविजुअल पे लैंड हुए, ये रैंडम वेरिएबल का एक वैल्यू हो गया, है ना. कुछ पार्ट उसका CGPA से डिटरमिन होता है, और कुछ पार्ट ऑफ NEP satisfaction is determined by other factors, right? Just like all population quantities, ये एक ट्रू वैल्यू है इसका जो हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं. रेसिडुअल एक उसका, अगेन यू कैन थिंक दैट इट इज एन एस्टिमेट ऑफ द ट्रू वैल्यू, क्योंकि ये रेसिडुअल का वैल्यू जो है तुम्हारा सैंपल के साथ चेंज होगा, है ना. सेम इंडिविजुअल का तुम्हारा सैंपल के साथ चेंज हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा बाकी लोगों का सैंपल कैसे उस पर डिपेंड करता है ना. सो दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन हाउ यू हैव प्रेडिक्टेड. ये UI हैट बेस्ड है कि तुम्हारा लाइन का प्रेडिक्शन कैसा है, और लाइन का प्रेडिक्शन, जो लाइन में तुमने बेटा नॉट और बेटा 1 हैट का प्रेडिक्शन डाला, वो डिपेंड करता है क्यों कि तुमने सैंपल कैसा कलेक्ट किया है.
अगर ये सैंपल की जगह तुम ये सैंपल कलेक्ट करते हो तो तुम्हारा लाइन कुछ ऐसा हो जाएगा, बेटर मे बी कुछ ऐसा हो जाएगा, right? So then the value of the residual depends on the sample that you have collected, right? So then this is a sample counterpart, not exactly equal to error. It depends on your estimation method. It depends on the sample that you have got. You can think of it as an estimator for this. And a lot of times we'll also use the residual as the estimate for, as you know, the true errors. But conceptually, they are different things. All right. So let us go to the properties of these estimators, beta naught hat and beta 1 hat. We will discuss two kinds of properties, right? So what we are going to do is, this is number 4, where we discuss the properties of OLS estimators. अब हमको पता चल गया है कि कोई भी सैंपल हो हमारे पास, तो उस सैंपल में हम ये OLS वाला मेथड लगा के एक ऐसी लाइन का इंटरसेप्ट और स्लोप निकाल सकते हैं जो उस डेटा को बेस्ट फिट करे, ठीक है ना? तो अभी हम ये नहीं कमेंट कर रहे हैं कि ये जो बेस्ट फिट है ये एक्चुअल पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन के कितना करीब है या उसका कितना अच्छा एस्टिमेटर है, राइट? दिस इज one aspect of the estimator. The other aspect is a few properties that will be true in any sample. Okay? So when we talk of properties, we will talk about two categories of properties. One are called algebraic properties and one are called statistical properties. Okay? So algebraic properties क्या है? Algebraic properties वो हैं which are basically true in any sample. Right? These properties are usually useful जब तुम when you're doing proofs about the sample, or when you are you know making, or rather very useful जब तुम्हारा काम prediction करना है, ठीक है? अगर तुम्हारा काम estimation करना है तब ये statistical properties हैं जो कि कहती हैं, so these statistical properties are the properties that look at beta naught hat and beta 1 hat as estimators. So the properties of beta naught hat and beta 1 hat as estimators. ठीक है? सो जब हम एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो हम कह रहे हैं कि कोई भी सैंपल में, क्योंकि ये ऐसा beta naught hat and beta 1 hat give a line that best fits the data. कोई भी सैंपल दे दो, ये फॉर्मूला लगा के मेरे को एक बेस्ट फिट लाइन दे दो, आई विल गिव यू अ बेस्ट फिट लाइन, ठीक है? सो देन दैट मीन्स दैट हर सैंपल में इस पर्टिकुलर प्रोसेस की कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज है, वो हो गई एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज. बट क्या ये बेस्ट फिट लाइन ट्रू बेटा नॉट और बेटा 1 हैट को, बेटा नॉट और बेटा 1 को एस्टिमेट करने के लिए यूजफुल है? हाउ यूजफुल आर दीज? दिस इज व्हाट कम्स अंडर स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज. Cool? All right. So we have like sort of 3 algebraic properties. I will not go into detail of them, but briefly I will discuss. So एक algebraic property है that the sample average of the UI hat is always 0. ठीक है? जो भी रेसिडुअल्स हैं उनके पूरे सैंपल में अगर तुम उसका एवरेज लोगे, है ना? एवरेज का मतलब कि डिवाइड बाय द सैंपल साइज आल्सो, तो सैंपल साइज से डिवाइड करोगे तो 0 होगा, व्हिच मींस कि उनका समेशन ही 0 होगा क्योंकि सैंपल साइज 0 नहीं है. दिस इज द फर्स्ट algebraic property. The second algebraic property is that the sample covariance between the x variables, मतलब हमारे केस में CGPA, and the residuals, this is always equal to 0. ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक हमने assumptions नहीं किए हैं, इसके ऊपर आई विल कम अ लिटिल लेटर. एंड द थर्ड प्रॉपर्टी
is that the mean values, right? So your x bar comma y bar will always lie on the SRF. मतलब कि जब तुम ऐसा लाइन बनाओगे ना, जो भी तुमने SRF फिट किया है, सैंपल रिग्रेशन फंक्शन, x का कोई मीन होगा, y का कोई मीन होगा, वो हमेशा इस पे लाई करेगा आइडेंटिकली। ओके, इसमें नहीं कर रहा है इतना, करवा देते हैं। Now these are properties that can be very easily proven. I don't want to get into the details, but ये कुछ properties हैं जो बहुत useful हैं, ठीक है? So x bar y bar हमेशा SRF पे lie करेगा, and when you sum all the residuals, ये जो सारे के सारे जो तुम्हारे gaps हैं in prediction and actual values, the summation will always be zero. मतलब on an average तुम्हारे residuals zero हैं, residuals का average zero है, residual का sum ही zero है, ठीक है? Okay, so a related concept that I will do today, and then we will do the rest of the things in the next class. Related concept is the concept of goodness of fit. Right, so yes, you have already done it. Goodness of fit is basically, measuring के जो तुम्हारा explained component है, right? How much is that as a relation in relation to the total variation, right? So when we talk about goodness of fit, now we are talking in terms of variation. Remember, another way to look at what we are trying to do here is that we are trying to explain variation. हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? Think about it. We have NEP values, right? We have के different लोगों का different level of satisfaction है NEPs. ठीक? Different people have different level of satisfaction NEP, which implies कि जो NEP है उसमें एक वेरिएंस है ना, हर किसी का सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं है। ऑफ कोर्स जो ट्रू NEP है, NEP सेटिस्फैक्शन, उसका कोई मीन है ना, NEP सेटिस्फैक्शन का कोई मीन है, but there exists variation around the mean. There is variance. Different people have different levels of satisfaction. What are we trying to understand when we say कि क्यों लोगों का NEP का different levels है? हम ये explain करने की कोशिश कर रहे हैं कि NEP का variance क्यों है? What explains the variance in NEP? Variance in NEP or any, y variable that we want to look at. And then we say that can the variance in NEP, can the variance in the y variable, can it be explained by a variance in CGPA? क्योंकि CGPA वेरी करता है, हर किसी का CGPA सेम नहीं है, राइट? CGPA वेरी कर रहा है, तो CGPA का वेरिएंस क्या NEP के वेरिएंस को एक्सप्लेन कर सकता है? कितना कर सकता है? वो ही कितने का मेजर है गुडनेस ऑफ फिट। CGPA अपना वेरी कर रहा है, NEP सेटिस्फैक्शन अपना वेरी कर रहा है। ये वाला वेरिएंस इस वाले वेरिएंस को कितना एक्सप्लेन कर सकता है? हो सकता है कि बिल्कुल ना करता हो, राइट? सपोज यू आर ट्राइंग टू लुक एट द वेरिएंस इन I don't know, height, right? Suppose height has no role to play in how satisfied you are with NEP, है ना? Usually नहीं होता है ये. So then variance in height will usually be able to explain very small part of the variance in CGP in your NEP, right? As compared to suppose तुमने CGPA को लिया है, CGPA शायद अच्छा क्वांटिटी एक्सप्लेन कर दे। यही जो है कि तुम इस how much can the variation in one variable explain the variation in the other variable, इसको ही measure करने का तरीका है goodness of fit. All right.
So there is something that you can explain. Of course, we have already seen कि NEP का सारा variation CGPA explain नहीं कर सकता. कुछ ना कुछ income से explain होगी, कुछ ना कुछ तुम्हारे खुद के पढ़ने की इच्छा से explain होगी, right? दुनिया जहान के factors से explain होगी, right? So then किस university में उससे explain होगी. So then there will be a lot of part that is not explained, right? Some variation in NEP. NEP में अगर इतना variation है, some part of it can be explained, some part of it will not be explained. जितना explain किया जा सकता है हमारे x variable से, उसको हम बोलेंगे a measure of goodness of fit. ठीक है? So the way we define is that we say that the total sum of squares is the basically total variance in the y variable, right? Then the explained sum of squares is the total variance in the predicted y variable, in the y hat variable, है ना? और जो रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स है वो है टोटल वेरिएंस इन द रेसिडुअल्स. ठीक है ना? तो ये जो प्रेडिक्टेड y वेरिएबल है ये क्या है? दिस इज नथिंग बट दिस प्रेडिक्शन इज कमिंग फ्रॉम x वेरिएबल. नो, ये x से ही प्रेडिक्ट होके आया है. तो इसका मतलब कि ये जो ये एक्सप्लेन पार्ट है, ये है वो पार्ट जो x से एक्सप्लेन हो जाता है, और ये है वो पार्ट जो x से एक्सप्लेन नहीं होता है. ठीक? सो देन गुडनेस ऑफ फिट क्या था? गुडनेस ऑफ फिट was basically, so this is how we said that we call it r square, right? So your r square was basically ESS upon TSS, है ना? जिसका मतलब था कि जो टोटल वेरिएशन है y में, कितना उससे explained as a ratio of that total variation, how much is that? This is your r square. You can also write it as 1 minus RSS upon TSS, जो कि obviously the total variance in y, right? ये है total. इसको और इसको sum करोगे, intuitively also it makes sense कि ये दोनों को sum करने से total के equal आ जाएगा, right? So then उस total में से ESS का component कितना है? That is your r square, जिसको हम बोलते हैं goodness of fit, and we also call it basically the coefficient of determination. Cool. So what we are essentially saying कि explain कितना कर पाए, जितना ज्यादा explain कर पाओगे उतना बेहतर तुम्हारा fit, उतना the better your fit, right? Or the higher is your goodness of fit. Cool. Now before I stop for today, just one thing I want to do is look at an interpretation, right? So interpret कैसे करते हैं हम? So the interpretation, suppose you have data and this is how your line looked like, right? So your NEP hat was equal to, suppose your satisfaction level ranges from say 0 to 100, right? And your CGPA ranges from I don't know, 0 to 10, right? So this is, suppose your value is say 40.15 plus 0.51 times CGPA. This is what a regression equation, a sample regression equation, estimated equation will look like. What is it saying? It is saying कि पहली बात तो देखो, ये है तुम्हारा beta naught hat. This is your estimate of the slope. ठीक? ये है, sorry, of the intercept, और ये है slope. So ये लाइन को जब ड्रॉ करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा. ठीक है? This is your 40.15 and the slope is around 0.5, so ऐसा कुछ. So you give me a value of CGPA, right? I will be able to give you a value. Suppose if CGPA is equal to say 7, right? So your NEP, the predicted NEP will be what? 40.15
plus 0.51 into 7, है ना? CGPA times the slope. So what do you have? You have 40.15 plus whatever this is. 7 5s are 35, so 3.57, right? So 40.15 plus 3.57. So your prediction is around, so this is 2, 5 plus 1, 6, 7, 43.72. You give me any value of CGPA, I will tell you a predicted value of NEP. अब इसको कैसे रीड करेंगे? इसको रीड करने का तरीका है कि when your CGPA is 0, when your CGPA is 0, तो तुम्हारा NEP प्रेडिक्शन NEP का कितना है? 40.15, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट तो 0 हो गया, right? This component is 0. So for people who have no CGPA, right, उनका कोई बिल्कुल ही अंडा स्कोर है, उनका satisfaction level कितना है? 40.15 out of 100. फिर as you increase the CGPA, right, for every unit increase in CGPA, how much does your NEP का prediction increase? 0.51. How does that? How do we get that? We have that del NEP hat upon del CGPA. कितना है ये? This will always be equal to beta 1 hat ना, in which case it is 0.51. So when your CGPA goes up from 7 to 8, your NEP, predicted NEP satisfaction goes up by 0.5. Right? So the interpretation is that 1 unit increase in CGPA implies predicted NEP satisfaction increases by 0.51. इसमें तो unit है नहीं, so units, but the unit, it's a unitless quantity, but whatever. This is how a regression equation, a predicted, an estimated relationship looks like, and this is how you interpret it. ठीक है, इसके अंदर एक और टर्म आता है which is called ceteris paribus, something that I will come to later. ठीक, all right. So I will stop here, and we will continue it in the next class, in the next session, where we will discuss the statistical properties and quickly discuss the multiple linear regression parts. Hopefully be able to complete the syllabus then. All right. So I hope this discussion made it intuitively clear कि हम किसी भी relationship, किसी भी econometric exercise में usually करना क्या चाह रहे हैं? हम करना चाह रहे हैं फिर से सच्चाई का पर्दाफाश, सच्चाई जो हमें दिखती नहीं है, जो ट्रू पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन जो हमें दिखता नहीं है, और हम उसको अपना टेक्निक लगा के, इस केस में OLS लगाकर, we will try to use the SRF to make the best guess about the true population regression function. And the way we do it is MLE, क्योंकि हम वैसे वैल्यूज ऑफ बेटा नॉट एंड बेटा 1 हैट चाहते हैं जो हमारे डेटा को बेस्ट फिट करें, जो हमारे डेटा का लाइक्लीहुड मैक्सिमाइज कर दें. Cool? All right, so let's stop here, and we will continue in the next class. Hope you find it useful. Happy learning. Bye-bye.